Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. So what we are going to do is we will discuss important questions as well as their answers for class 10 science, right? We will be taking into consideration the questions which came in the board exam in the last few years, and we will understand how to write correct answers for that. So if you watch this video completely, it's definitely going to improve your score in the final exams. So just watch this and take a note of it. If you have not subscribed the channel, you can subscribe the channel Learn with Nisha ji and stay tuned to get better marks. So for first chapter, that is chemical reactions and equations, in the year 2019, this question was asked. It's a very good question. A reddish brown metal used in electrical wires, okay, when powdered and heated strongly in an open china dish, its color turns black. When hydrogen gas is passed over this black substance, it regains its original color. So based on this substance, we have to name the metal and the black colored substance formed. तो देखो यहाँ से हमें हिंट मिल रहा है रेडिश ब्राउन मेटल है एंड इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज होता है सो इट्स कॉपर ओके सो मेटल इज कॉपर और हीटेड स्ट्रांगली इन एन ओपन चाइना डिश मतलब ऑक्सीजन ऐड होगा उसमें ठीक है तो ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस क्या बनेगा कॉपर ऑक्साइड CuO राइट नाउ राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर बोथ द रिएक्शंस तो फर्स्ट रिएक्शन में तो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ Cu plus O2 gives CO you can balance this right एंड सेकेंड में क्या हुआ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस तो CuO plus H2 इसमें क्या होगा बेसिकली CuO से O रिमूव हो जाएगा एंड Cu plus H2O will be formed right so very conceptual question and scoring also. This question was asked in the year 2020. It says define a redox reaction. Okay, so redox reaction, it involves simultaneous oxidation and reduction processes, right? Second is identify the substances oxidized and reduced in the following reactions. Okay, so first is PbO plus C gives Pb plus CO2. So we can see C, carbon is oxidized to CO2, right? और reduction किसका हो रहा है PbO. It is reduced to Pb, right? Next is MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus H2O plus Cl2, right? So here HCl is oxidized to Cl2 क्योंकि removal of hydrogen is oxidation only और reduction हो रहा है MnO2 का तो MnO2 is reduced to MnCl2, right? So in the year 2021, this question was asked, what is rancidity? Mention any two ways by which this can be prevented. Okay. So rancidity, it refers to the unpleasant taste and smell in foods containing fats and oils due to oxidation. Prevention methods हैं adding antioxidants to foods and storing food in airtight containers away from light. Right? In the year 2022, this question was asked, select from the following decomposition reaction in which source of energy for decomposition is light. ठीक है तो ये सभी decomposition reactions एक compound दो अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर या एलिमेंट्स के अंदर ब्रेक हो रहा है ठीक है लेकिन इसमें हमें वो आइडेंटिफाई करना है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है लाइट की वजह से राइट सो दिस इज द फर्स्ट वन AgBr gives Ag plus Br2 राइट ये फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट राइट 2023 में ये क्वेश्चन आया था बैलेंसिंग का सो Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2 इसे हमें बैलेंस करना है राइट तो पहले हम आयरन को बैलेंस करेंगे यहाँ पे 3 एटम्स हैं यहाँ पे 1 है सो वी ऐड अ 3 हियर राइट Fe गेट्स बैलेंस्ड राइट फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे 1 है तो वी राइट अ 4 हियर राइट हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ 8 हो गए अब इधर 2 हैं तो we write a 4 here also so this gets balanced now. In the year 2024 the question asked was identify the type of chemical reaction and write balanced chemical equation for the reaction that occurs when lead nitrate solution is mixed with potassium iodide solution. ठीक है lead nitrate हो गया PbNO3 whole twice potassium iodide is Ki तो क्या होता है इसकी रिएक्शन में PbI2 और KNO3 बनता है
तो दिस इज बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एज वेल, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक्वस फॉर्म में है और हमें फाइनली एक सॉलिड मिलता है एंड KNO3 का एक्वस सॉल्यूशन, राइट। नेक्स्ट वी हैव चैप्टर 2 दैट इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर से ईयर 2019 में क्या क्वेश्चन पुट अप हुआ था, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। So NaOH plus HCl. So this will give you NaCl plus H2. What is the nature of the resulting solution? It will be neutral, right? And due to neutralization, basically acid or base react कर रहा है to give salt and water, right? और एक और क्वेश्चन आया था, like why do HCl and HNO3 they show acidic characters in aqueous solution but not in dry state? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब उसे वाटर में ऐड करते हैं तो दे डिसोसिएट इनटू H प्लस आयंस, ठीक है, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर व्हिच कॉजेज देयर एसिडिक कैरेक्टर। 2020 में इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया था, व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है, मेटल प्लस एसिड का रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन इज इन्वॉल्व्ड एंड जिंक सल्फेट इज फॉर्म्ड। रिएक्शन हो जाएगी Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2, राइट। एक और क्वेश्चन आया था इसमें, नेम द गैस इवॉल्व्ड व्हेन बेकिंग सोडा रिएक्ट्स विद एन एसिड, ओके, हाउ डज दिस प्रॉपर्टी ऑफ बेकिंग सोडा यूजफुल इन बेकिंग, ठीक है। तो बेसिकली जो गैस इवॉल्व होती है वो CO2 होती है, CO2 will make the cakes and bread fluffy by creating air pockets, okay, that's why it's used in baking। 2021 में इस चैप्टर से क्वेश्चन आया था, डिफाइन द टर्म pH, वेरी सिंपल, राइट द रेंज ऑफ एन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन pH, ओके। तो pH इज अ मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। एसिडिक में pH होगी लेस देन 7 और बेसिक में ग्रेटर देन 7, राइट। सेकेंड क्वेश्चन जो आया था इसमें था, वाई इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एसिडिक इन नेचर, ओके, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। तो NH4Cl है, एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो H प्लस आयंस फॉर्म होते हैं, ओके। रिएक्शन आप लिख सकते हो NH4Cl plus H2, इट गिव्स NH3 plus H plus plus Cl माइनस, तो इस H प्लस आयंस की वजह से एसिडिक होता है। तो आप देख सकते हो कि जनरली क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो बहुत डायरेक्ट नहीं है, वो एप्लीकेशन बेस्ड है, ठीक है, नॉलेज टेस्टिंग वाले हैं। तो लेट्स सी 2022 में क्या क्वेश्चन आया था हमारा। इसमें पूछा था, व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट HCl। तो एसिड में बेसिकली आप ब्लू लिटमस पेपर डिप कर रहे हो तो क्या होगा, ब्लू लिटमस विल टर्न रेड, ठीक है। एक्सप्लेन द चेंज। HCl एसिडिक होता है, इट रिलीजेस H प्लस आयंस इन द सॉल्यूशन, हेंस द कलर, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया था इसमें, व्हाई इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स। तो मॉइस्चर विल रिएक्ट विद प्लास्टर ऑफ पेरिस टू फॉर्म जिप्सम व्हिच विल मेक इट यूजलेस, हार्ड मटेरियल फॉर्म हो जाता है, तो इसलिए हमें मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना पड़ता है, राइट। 2023 में जो क्वेश्चन आया था दैट वाज, हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो baking soda we have to heat, okay, to form washing soda. So NaHCO3 will give you Na2CO3 plus CO2 plus H2, right? एक और क्वेश्चन आया था इसमें, explain why does dry HCl gas does not change the color of dry litmus paper while aqueous solution of HCl will do। क्योंकि dry HCl में H plus ions तो है ही नहीं, which is responsible for the acidic nature and color change of litmus, लेकिन aqueous solution में H plus ions होंगे, that will cause a change of color। So 2024 में जो क्वेश्चन आया था, very interesting, explain why tooth decay occurs more when pH of the mouth is lower than 5.5। तो less than 5.5 कैसा environment हो गया, acidic, ठीक है। तो एसिडिक एनवायरनमेंट में जो इनामल होता है, इनामल बेसिकली कैल्शियम फॉस्फेट होता है, वो कोरोड होता है, ठीक है, वो कोरोड हो जाएगा, उसकी वजह से टूथ डिके हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आया था, अ फार्मर एड्स क्विकलाइम CaO टू द सॉइल, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एक्शन, राइट। तो क्विकलाइम क्या करेगा, इट विल न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल, इंप्रूविंग इट्स फर्टिलिटी, राइट।
नाउ लेट अस सी फॉर चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स 2019 में ये क्वेश्चन आया था like write the electron dot structure for sodium and oxygen and show the formation of Na2O by the transfer of electrons, right? वेरी गुड क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, सोडियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल होता है Na, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या होता है, उससे रिप्रेजेंट होता है, राइट। अगेन वन मोर सोडियम विल कम, Na। तो सोडियम में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे एज अ डॉट हम शो कर देते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द आउटर मोस्ट शेल, राइट। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हम ऐसे दिखा देते हैं, 2 हेयर, राइट, 2 हेयर, 4 हो गए, 5 एंड 6, राइट। तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटर मोस्ट शेल में। तो नाउ व्हाट हैपेंस, each sodium donates 1 electron to oxygen, okay, forming Na plus and O2 minus ions। तो अब एक्चुअल में इसमें क्या होगा, ये जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन को यहाँ डोनेट करेगा, ठीक है, और खुद Na प्लस बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ ऑक्सीजन को डोनेट करेगा और ये बन जाएगा Na प्लस, और ऑक्सीजन के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ऑक्सीजन विल बिकम 2 माइनस। तो इससे आप देख सकते हो ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे, ऑक्टेट इज कंप्लीट, राइट। तो इस तरह से हमारा Na2O कंपाउंड बनता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सेकेंड क्वेश्चन जो आया था 2019 में, इट वाज लाइक व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आप किसी भी आयनिक कंपाउंड्स को देखो जैसे NaCl, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स दोनों ही बहुत हाई होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, ठीक है। आयनिक है जैसे Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा वो बहुत ज्यादा होगा, तो उसे ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे हैव सच हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, राइट। नाउ 2020 ईयर में जो क्वेश्चन पूछा था दैट वाज एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है, बट रेजिस्ट्स कोरोजन बेटर। रिएक्टिव तो ज्यादा है एल्यूमिनियम एज कंपेयर टू आयरन, राइट, लेकिन कोरोजन कम होता है उसमें। व्हाई इट इज सो, बिकॉज एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, ठीक है, एक ऑक्साइड लेयर बन जाती है दैट प्रिवेंट्स फर्दर कोरोजन, व्हाइल आयरन फॉर्म्स रस्ट। आयरन के केस में रस्ट बनता है, वो प्रोटेक्टिव नहीं है, इट्स नॉन प्रोटेक्टिव, राइट। Another question which was asked is a metal X reacts with oxygen to form an amphoteric oxide. Okay. तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा मेटल बनाता है, हमें पता है एल्यूमिनियम, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द मेटल, इट इज एल्यूमिनियम, ओके। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ द ऑक्साइड with first is hydrochloric acid, second is sodium hydroxide। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या है, Al2O3, एक बार वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा और एक बार Al2O3 is reacting with NaOH। So let's see what is formed। HCl के साथ रिएक्शन में ये AlCl3 प्लस वाटर देता है, और NaOH के साथ रिएक्शन में ये NaAlO2 प्लस H2O देता है, राइट। यू कैन बैलेंस दीज इक्वेशंस। 2021 में क्वेश्चन आया था व्हाट इज मेंट बाय द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, राइट इट्स सिग्निफिकेंस। तो रिएक्टिविटी सीरीज इज द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, और सिग्निफिकेंस क्या है, इट प्रिडिक्ट्स द आउटकम ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड हेल्प सिलेक्ट द मेटल्स फॉर एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था उसमें हमें रिएक्शंस देनी थी, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कॉपर विल टर्न ब्लैक, ओके, CuO फॉर्म होता है, तो Cu plus O2 gives CuO, we can balance this। सेकेंड है जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl, तो Zn plus HCl it gives ZnCl2 plus H2, राइट। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी मेटल और एसिड जब रिएक्ट करेंगे, राइट। 2022 में जो क्वेश्चन आया था, वेरी गुड क्वेश्चन, व्हाई डज जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट नॉट वाइस वर्सा। सी जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है,
तो वो डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को फ्रॉम CuSO4, बट कॉपर कैनॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम ZnSO4 बिकॉज वो लेस रिएक्टिव है, राइट? एक और क्वेश्चन जो आया था, व्हाट आर अलॉयज? सो अलॉयज आर द मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स विद अदर एलिमेंट्स. एंड व्हाई इज स्टेनलेस स्टील प्रेफर्ड ओवर प्योर आयरन? क्योंकि स्टेनलेस स्टील विल रेजिस्ट कोरोजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम, तो इसमें कोरोजन कम होगा, राइट? नेक्स्ट इज 2023 में ये क्वेश्चन आया है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर इन अ ब्लास्ट फर्नेस. मेंशन द रोल ऑफ लाइमस्टोन इन द प्रोसेस. तो Fe2O3 ऑक्साइड फॉर्म में होता है, वी यूज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस CO, इट गिव्स Fe प्लस CO2, राइट? और लाइमस्टोन का क्या रोल रहता है? इट एक्ट्स एज अ फ्लक्स एंड इट रिमूव्स इम्प्योरिटीज बाय फॉर्मिंग स्लैग. स्लैग कैसे फॉर्म होगा? CaO plus SiO2, it will give CaSiO3, right? Next is reasoning question, like why gold is used in jewelry? Because gold is malleable, ductile and resistant to corrosion. Second, sodium is stored in kerosene. See, sodium highly reactive hota hai. It reacts with moisture and oxygen in the air, so it is stored in kerosene. उसे save करने के लिए, right? So in 2024, this question was asked, like define an alloy and give the composition of brass and bronze. Okay. So alloy is a homogeneous mixture of metals or a metal with non-metals. Brass का composition होता है 70% copper and 30% zinc. और bronze में होता है 90% copper and 10% tin. Right? Another question was like explain why non-metals do not conduct electricity, and you have to give an exception also. See, non-metals जो होते हैं, they lack free electrons to conduct electricity, so they do not conduct electricity. And exception is graphite, a form of carbon which conducts electricity due to the presence of delocalized electrons. Okay. Next is chapter 4, carbon and its compounds. इसमें 2019 में जो question पूछा है, why are covalent compounds generally poor conductors of electricity? Because they do not have free ions or electrons to conduct the electricity, right? Second is write the structural formula for ethanol and ethanoic acid. तो ethanol होता है CH3CH2OH and ethanoic acid होता है CH3COOH. Okay. Next, what happens when ethanoic acid reacts with sodium carbonate? Write the balanced chemical equation. तो इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, रिएक्शन होगी CH3COOH plus Na2CO3, it gives CH3COONA plus CO2 plus H2. तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इवॉल्व, राइट? 2020 में ये क्वेश्चन आया था, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर मीथेन एंड इथीन. ओके, तो मीथेन होता है हमारा CH4, ठीक है? तो इन द सेंटर यू कैन हैव अ C, ठीक है? And you have 4 covalent bonds, okay, with H atoms around this C. तो यहाँ पे आप 4 H attach कर दो one by one. So this is the structure of methane, right? Second is ethene. Ethene is C2H4, ठीक है? तो there will be a carbon, another carbon. Ethene है, तो there is a double bond between 2 carbon atoms, right? And single bond with H atoms. तो इसमें basically 2 H यहाँ होंगे और 2 H यहाँ attach होंगे. Right? So H here, H will be 1 H will be here, 1 H will be here and 1 H will be here. So this is the structure of ethene. Second question which was asked is explain the term homologous series of organic compounds. Give an example. So a group of organic compounds with the same functional group and general formula which differ by a CH2 unit, okay, इनको हम बोलते हैं homologous series. Okay, examples हैं जैसे alkanes. Alkanes में आप देखो methane is CH4, ethane is C2H6, then propane is C3H8 and so on, right? Third question is what happens, okay, when ethanol is heated with excess concentrated sulfuric acid at 170 degrees Celsius? Write the equation. So ethanol will undergo dehydration to form ethene. Water remove हो जाएगा. So CH3CH2OH, it will give you C2H4 plus H2O, right? Year 2021 में ये question आया था, why does carbon form covalent bonds?
So see, carbon has 4 valence electrons. It cannot lose or gain electrons easily. Okay. So it shares electrons to achieve a stable octet. क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना या 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना इट्स टू टफ, राइट. सेकंड एक क्वेश्चन आया था, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद एग्जांपल्स. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड्स, जैसे मीथेन है CH4. अनसैचुरेटेड में दे कंटेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स लाइक इथीन C2H4. एक और क्वेश्चन आया था इसमें, व्हाट इज द रोल ऑफ बेकिंग सोडा इन द सैपोनिफिकेशन रिएक्शन. तो बेकिंग सोडा इट एक्ट्स एज अ बेस टू हाइड्रोलाइज फैट्स इनटू ग्लिसरॉल एंड सोप, राइट. 2022 में ये क्वेश्चन पुट अप हुआ था, व्हाट इज सोप, एक्सप्लेन द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप विद द डायग्राम. तो सोप is a sodium or potassium salt of fatty acids. It cleans by emulsifying grease and dirt into micelles, which are washed away with water. ठीक है. For the diagram, you can watch the relevant lecture which I have posted right in the comment section for this chapter. Right. Next is explain the formation of scum with soap. Okay. When soap is used with hard water. हार्ड वाटर के साथ आप सोप को यूज करोगे तो स्कम फॉर्म होती है, ठीक है. तो इट फॉर्म्स व्हेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इन हार्ड वाटर दे रिएक्ट विद सोप टू फॉर्म इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, राइट. 2023 में ये क्वेश्चन आया था, राइट द IUPAC नेम्स. ओके. तो IUPAC नेम्स फर्स्ट में आप देखो 3 कार्बन एटम्स हैं, तो प्रोप, ओके, सिंगल बॉन्ड्स वाला ही है सारा, प्रोपेन, और OH फंक्शनल ग्रुप है तो OL, तो प्रोपेनॉल, राइट. सेकेंड पार्ट में 3 कार्बन एटम्स आर देयर, ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स वाले ही हैं तो प्रोपेन, और कीटोन है ये बेसिकली CO ग्रुप की वजह से, तो प्रोपेनॉन, राइट. एक क्वेश्चन आया था, व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, राइट द इक्वेशन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. जब हमारी एक ऑर्गेनिक एसिड और एक ऑर्गेनिक अल्कोहल ये रिएक्ट कर रहा है, तो CH3COOH plus CH3CH2OH, it is going to give you CH3COOCH2CH3 plus water is released. तो इथेनोइक एसिड it reacts with ethanol to form an ester. इस एस्टर को बोलते हैं इथाइल इथेनोएट एंड वाटर. Okay. Next question is explain why graphite is a good conductor of electricity but diamond is not. See, graphite में delocalized electrons होते हैं that conduct electricity, and diamond lacks free electrons. That's why, right? 2024 में ये questions पूछे गए थे. Write the balanced chemical equation for combustion of methane. So CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O. Second is very good question. A student tests the pH of water before and after adding a few drops of ethanoic acid. So what will be the observation and reason? So pH will decrease after adding ethanoic acid. Ethanoic acid is a weak acid which increases the H plus ion concentration, right? Last question was what are isomers and draw the structures of 2 isomers of butane. So compounds which have the same molecular formula but different structural arrangements, they are called isomers. जैसे ब्यूटेन में 2 केसेस हैं, N-ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, ठीक है. तो N-ब्यूटेन तो हमारा सिंपल जैसे होता है CH3 CH2 CH2 CH3 इस तरह फॉर्म होगा. आइसोब्यूटेन में CH3 होल ट्वाइस CH CH3 ये स्ट्रक्चर रहेगा, राइट. Next comes chapter 5, life processes. So these are the questions asked in the year 2019. You can go through, right? These are questions for year 2020, right? These 3 questions were asked in the year 2021. Then these are the questions for the year 2022. All these questions were asked in year 2023. These are asked in 2024, right? Now we come on to the chapter 6, control and coordination. So these 3 questions were asked from this chapter in the year 2019. So these 3 questions were asked in the year 2020. These were asked in year 2021. These are for year 2022. This is for year 2023. Just observe here,
human brain diagram was asked here, right? Then 3 questions in year 2024, right? So for chapter 7, these are the questions asked in the year 2019, right? 2020, then 21, 22, 23, and this is for 2024, right? So you can go through all the questions and answers. You can just pause the video, watch these questions and answers, go through them. If you have any doubts, you can post it in the comment section, right? So for the chapter 8 heredity, these 3 questions were asked in year 2019. So these terms are important: heredity, evolution, dominant and recessive traits, right? In 2020, these 3 questions were asked. So gene is an important term, Mendel's law of segregation, role of natural selection in evolution. These are important topics. In 21, this was asked, like significance of work of Gregor Mendel in the study of genetics, then genetic variation, genetic drift, all these were asked. In 2022, these 3 questions were asked. Mutation important term hai, right? Then in 23, this gene pool came into picture, okay? Survival of the fittest and speciation. 24 में हमारा क्रोमोसोम्स का रोल आया है एक, ठीक है? होमोलोगस हेट्रोजेनस क्रोमोसोम्स आया है. Then evidence for theory of evolution, all these were asked, right? Now for the chapter number 9, that is light reflection and refraction in 2019, we were asked about law of reflection, formation of rainbow, the difference between concave and convex lenses, right? 2020, they asked about focal length of a lens, mirror formula, okay, and working of human eye. Then in 2021, they asked about refraction of light with a diagram, okay. Then pencil is appearing bent in a glass of water if it is placed, okay. Then about angle of reflection, right? In 2022, questions were asked about total internal reflection, power of a lens, role of iris in the human eye. In 23, these 3 questions were asked, right? And in 2024, again, these 3 questions were asked. So for the chapter number 10, the human eye and the colorful world, these 3 questions were asked in 2019. In 2020, these 3 were asked, right? In 2021, these are the 3 questions asked. See, wherever possible, try to support your answers with diagrams. जितना आप अपने पेपर को presentable बनाओगे, उतना ही आपका score बढ़ेगा, right? So again in 2022, role of iris in human eye, why sun appears red during sunset, hypermetropia, all these were asked. Then 23 में accommodation, okay, significance of focal length, right? All these were asked. 24 के ये हैं हमारे questions, right? Next is chapter 11, electricity. इसमें 19 में आए थे हमारे questions regarding electric current, Ohm's law and resistance. Then 2020 में these 3 questions were asked. 2021, these 3 were asked, right? In 2022, very good questions. All the 3 questions are good. Okay. Power निकाली थी यहाँ पे, power V into I होती है. So I is P by V. P और V हमें given है, I find out करना है. We can easily find it. In 2023, these 3 questions were asked and you can see simple formula based questions आ रहे हैं numericals में, जैसे power is equal to V into I. Very simple question, right? 24 में भी आप देख सकते हो, 1 theory question was asked and 2 numericals. और numericals really simple. Energy is equal to P into T, एक ये formula लग रहा है, और एक parallel resistance का formula apply हुआ है, right? Then chapter 12, magnetic effects of electric current. इसमें से 3 theoretical questions आए थे in the year 2019. 2020 में हमारे theoretical questions आए थे, but you can observe जहाँ आपका कोई formula involved है, किसी भी topic के साथ या कोई diagram involved है, try to add it to the answer. It will fetch you more marks, right?
2021 में प्योरली थियोरेटिकल क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से. In 2022, Fleming's left-hand rule, okay, working of electric motor and factors affecting magnetic field, ये सब पूछा गया है. In 2023, solenoid का concept पूछा है, Faraday's laws, electric fuse. Electric fuse is really important. 2024 में magnetic field, working of motor, armature in motor, ये सब पूछा है. Then for chapter 13, our environment in the year 2019, ecosystem, food chain, biodiversity, all these were asked. In 2020, decomposers, biological magnification and ozone layer related questions. In 2021, these three questions were asked, right? In 2022, these three theoretical questions were asked. These are the questions for the year 2023. And here we come on to 2024 questions. These include carbon footprint, waste management significance, endangered species, right? So these are all the set of questions asked in the last few years for the chapters of class 10 science. Okay, if you have any doubts in any questions, you can post it in the comment section. And if you want to revise the concept related to any chapter, I have posted the link to the playlist here. You can watch the desired chapter and clarify your concepts. And if you have not subscribed the channel yet, you can subscribe the channel and stay updated and improve your score in class 10 science exams. Best of luck for your future and thanks for watching the video.